Honorable Chancellor, sir, to please address our gathering. Thank you very much, ma'am. Good afternoon, everyone. Oh my God, Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. हाँ, अगर आपको फिल्म वालों को अगर फिल्म में काम चाहिए तो इतने फिल्म वाले सामने बैठे हैं तो आप जोश दिखाएंगे तो काम मिलेगा. Good, lovely. Well, what a pleasure to be here this afternoon with all of you, my dear friends, on this beautiful, well-designed program of AAFT 121st AAFT Festival of Short Digital Films. My heartiest welcome to all of you to this beautiful day. Let me take this wonderful opportunity to extend my heartiest welcome to all the dignitaries on the dais. From UK, our special guest, VIP guest, Lord Remy Ranger, who's come all the way from United Kingdom. We have with us Nukul from Ireland, and of course all our distinguished guests from neighboring states and from Delhi NCR. Well, let me start with two lines. कि नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, अब कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, इरादे बदलो किनारे बदल जाएंगे. The fact is that someone who is not even known to the world of film, television and media, when he joins AAFT, the job of AAFT is to change the mindset of the student and prepare them for this most beautiful, fascinating, paying, attractive industry of the world. Glamour industry is the biggest industry in the world, mind you. If you make a sum total of all the industries of all the countries of the world, glamour industry is #1 today. You'll be surprised. When it comes to India, obviously we are the 6th biggest industry in media and entertainment, and the best part is that we are about to touch 3,80,000 crore rupees. The industry is growing at the rate of 12% per annum, whereas the total GDP of the country is growing at the rate of 6.75. So you can well imagine the contribution of media and entertainment industry is fantastic when it comes to the GDP of the country. Yes, I'm not going to talk more economies here, but yes, I'm so happy, I'm so excited because today we are writing history. The program may be small, but it is today a very, very impactful program with so many important dignitaries right on the dais. And I made it a point to have people like Lord Remy Ranger on the dais today itself because we are writing history. We are breaking our own world record of Festival of Short Digital Films. And you all are today witness to this historical moment. You'll be surprised, there is no other festival on this earth which has touched 121st edition. You know that? If you don't know, listen to me. ताली अपने लिए बजाइए और जोरदार बजाइए कि दीवारें कांप उठे. दीवारें कांपनी चाहिए क्योंकि आप इतिहास पढ़ते हैं, याद रखिए, आप इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन जब किसी को इतिहास बनाने का मौका मिल रहा हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का दिन आपकी जिंदगी में भी कितना महत्वपूर्ण हो सकता है. Yes, I'm very happy. We have last time conducted 120th festival. This is 121st festival. I'm going back in 1993 when we started this festival in AAFT in Marwah Studios in Noida Film City. The best part is that when we completed the first batch of AAFT, we wanted to showcase the films to the public. We wanted people to come and see how beautiful our people have actually designed these films. Yes, and that was a very humble beginning of AAFT Festival of Short Digital Films. 25th event was a bigger, and it was a big one. 50th was a bigger one. 100th was the massive one, and 125th attracted the attention. Now it's going to attract the attention of the whole world. I'm very happy wherever I have mentioned about AAFT Festival of Short Digital Films, people are amazed. They're not ready to believe. They can't even imagine that an institution can take a festival to that height. This is the only festival which happens every 3 months. This is the only festival which happens 4 times a year. This is the only festival where young directors are given a golden opportunity to showcase their debut film.
I'm associated with large number of festivals all over the world. I've been a guest, chief guest, a member, a delegate all over the world, but I have not yet seen people giving opportunity to more than 3-4 new filmmakers to showcase their debut film. This whole festival is meant for young, dynamic directors, and the best part is that in a span of all these 31 years of this festival, we have crossed more than 3,000 directors from more than 100 countries of the world who have already showcased their film in this kind of a festival. So my dear friends, without taking much of the time, let me tell you that today we all are part and parcel of a very historical moment. In many occasions, people say it's a historical day, it's this, that. But today, the fact is that you are actually part of the history written today in AAFT. My heartiest congratulations to all of you, because today you may be watching this film for 121st. Your films are going to be shown in 122nd AAFT Festival of Short Digital Film exactly after 3 months. You will be cordially invited that time to come back and see your films in a much bigger and a better way. With all these words, I once again take my wonderful opportunity to once again welcome all the dignitaries on the dais and wish you all the best, all the success, and a very happy festival. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir. Dr. Karthik Ramesh has just joined us. He's a CEO and founder of SAIMA Labs, Chief Advisor Strategy and Transformation, CSAR-HP, ex-Chief Digital and Innovation Officer, thankfully Chief Growth and Officer, TechSpec. We welcome you, sir. He's from UAE. Now I request Mr. Nakul Wali, sir, please speak few words. And I'm very much, what can I say? Sometimes कभी-कभी क्या होता है ज़िंदगी में आपके पास words कम रहते हैं. Just to see the power of India as a whole. I live in Ireland, so I'm a research commercialization specialist. So my background is typically ICT, tech researcher. But ज़िंदगी में हमेशा you want to do something in life, you'll always do it. So I'm a part-time theatre artist as well, and we'll be doing the Indian Film Festival of Ireland for the last 15 years now. And we have Sandeep Mahara, the golden kind of global media scientist. We facilitated him this year for this wonderful opportunity. And thank you so much, I think, for everybody, all of you, अपने ज़िंदगी में सपने देखो, सपनों को कामयाब करने के लिए just work hard. And I just want to wish everybody all the very best. Thank you so much for having me. Thank you so much, sir. Now I request Mr. Siddharth S. Nair, sir, to please speak few words. It's an honor and a pleasure to be here, part of the best of the dice. I'm sharing the sequel, and I'm sure tomorrow it is there in your mind, and you also think that later when your career is really happening, you want to be part of this, dice like this. So to begin with, I would say it's an honor, of course, and I'm sure you all aspirants have gone through the process of learning. Learning is very important. Please make sure that this is the right time. This is your right time. Just nurture the skills that you can really take from all across surroundings, because this is going to help you tomorrow. This is the right point where the I would say the crossroad, where the learnings will make a lot of difference in your writing, in your direction, production, acting, or whichever career you choose later. So in this short digital film festival which is there, I'm sure many of you have made content and you look for praises, of course, they'll come their way. But make sure, as a saying says, short is sweet. So now the audience also are changing. Initially it used to be 3 hours, 2.5 hours, 2 hours. Later on 30 minutes, and now 5 seconds. So things are changing very fast. Your content has to match it.
Your content has to match your audience thought process. And yet you have to be different so that they watch it. So with that, I request all of you to put more of focus on your content, and I'm sure you will do wonders in the future. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now I request Mr. Ajay Chitnis, sir, to please speak few words. At the outset, let me thank Sandeep ji for inviting me over here. I'm absolutely delirious today because I'm quintessentially a chronicler and a documentary filmmaker and a biographer. And out of those 120 odd documentaries I've done, it's probably the first time that me being a biographer and my subject, Lord Ravi Hinchul is also here. So I happened to do a feature on his journey and the life of his parents. So I'm absolutely overwhelmed at this time, and it's something which I can't describe. Very like taking a cue from what Siddharji was saying is that all of us can't become filmmakers, but there is huge, humongous scope for making short films or documentaries. Right from the moment you get up in the morning, you open the window, everywhere around you, you'll find stories. So you need to keep your eyes open, your ears open, find for content and work for it. What I practice, I never learned. What I've learned, what I'm practicing, I never learned. So I feel that you should be constantly in the process of learning. You should be open to ideas and believe in yourself. You're going to fall, you need to rise. So my best wishes on this historic moment, as Sandeep ji said, that it is the 121st film festival, and more power to you and best wishes. Thank you so much. Thank you so much, sir. Now I request Ms. Winky Singh ma'am to please speak few words. So much gratitude to Dr. Sandeep Marwah and all the distinguished guests here to give us this opportunity to have a one-on-one with all of you, all the bright minds here. So one word of wisdom which I would like to share with everybody, since you're all potential filmmakers, tomorrow's filmmakers: add meaning to your cinema. Whatever you create, just see that you add a little more meaning to the society with your work. Because I go back to Fellini's words for 8.5. In the end, he has a scroll which says, if you don't have anything new to make, hold it. Don't make it till the time you have something new to say. So this is something I took from him when I was studying cinema. I realized that he's so right, because our films are not just created for a few set of eyes. There are millions who get inspired. Millions who start taking the track, whether a filmmaking track, whether the societal norms, sanctions, whatever they follow tomorrow. So anything you add, any genre you go across, just try and add a little meaning. That's your onus to being a filmmaker, so that the society on the large becomes a good place to be in. That's our onus as filmmakers. So that's something I'm sure whenever I've been here, I've seen some very meaningful work here, and I'm so proud to be a part of this, because when it comes from the top, when it comes from somebody like Dr. Marwah, who's in and ingrained, films and ingrained so much of media potential he has, it's going to transmit onto you. So you all are really lucky to be in a place where you have such great leaders, on the top. So respect that and try and make your own changes in your world of cinema. I think that's what we all look forward. Thank you so much gratitude. Thank you very much, ma'am. Now I request Dr. Kartik Ramesh to please speak few words. Very good morning to all, and respected Dr. Sandeep Marwah ji and all the esteemed dignitaries on this dais, and all of the wonderful, respected filmmakers in this digital film festival. I am sorry I was late because I just came from UAE and had to rush after a meeting in the morning. It's always a pleasure to come back, because I feel that whenever I come to Marwah Studios, like they say,
kahani abhi baki hai. Right? I came here 3 years back, and anything you invest here, I'm sitting next to this Lord Ganesha statue here, and I feel blessed. I feel this place represents the principle of Lord Ganesha, this digital film, because anything that Lord Ganesha stands for abundance, for prosperity. Since my very first visit here to AAFT, where I think it was 118th or 19th edition, while I've not been part of the formal function, organized by Sir, I see that anything which is invested here in terms of our time, our presence, I wanted to make it from the UAE for this event, because every time I come here, I feel that there is opulence, there is something very good which happens in my life. And I want to give credit, since the theme is digital film. I came here 3 years back, I think, and the very first thing Dr. Sandeep Marwah said, I want you to record a short interview on your free heart homograph world bank, which is being done today by a very reputed humanitarian leader, Srimad Sudan Sai. In fact, the hospital after that video was shortly launched by none other than Honorable Prime Minister himself, along with the world's first free rural medical college near Bangalore International Airport. Now, the impact of which each one of you is creating through this digital film festival, I experienced 2.5 years back with that video on the importance of organ donation, the importance of human heart. So I represent a company which is called as Universe Business Machines. All the other companies which was read in the introduction are subsidiaries here in India, where I work for His Excellency Royal Highness Sheikh Hassan bin Tahnoon Al Nahyan, who is related to the royal family, ruling family of UAE. What I experienced since I joined them this year is till date that short film which I made, that short interview I made on Marwah Studios has such a far-reaching impact. You are all story makers, you are all change makers. Sir, I am extremely grateful to you. After we made that video, the initiative became global. Honorable Prime Minister came, launched a rural medical college in Srimad Sudan Sai Institute of Medical Science Research. And subsequently after that, I made a video on, it was a short interview on the role of ethical and responsible AI. So every time I come here, Dr. Sandeep himself gives me the topic. It's not like we plan it, ki ye baat karo, wo baat karo, but he says, Karthik, I want you to talk on this topic today. And mostly I'm underprepared, as I am today. But he knows what it is. A true leader, a visionary like Dr. Sandeep Marwah, I feel jealous of you, envious of you. Day in, day out, you're seeing this person, you're interacting with him, you're moving. And Dubai, I feel, sir, is your second. Everybody knows, sir, there also. 2 days back, we launched the first edition of the UAE Healthcare Leadership Summit and Awards, which was attended by senior members of the UAE government, the Ministry of Health, the Ministry of Innovation. We had several leading CEOs of hospitals across the 7 Emirates of UAE. And we were thinking of who is the right person to be the jury member of this. And unanimously, Dr. Sandeep Marwah's name came. He adjudged the top 20 power list leaders of UAE in healthcare. So when you do digital films, you're not restricting yourself. So I work primarily in the space of AI, ethical AI and cardiovascular sciences. I do a lot of digital transformation. But the unique advantage of this festival under the august leadership of Dr. Sandeep Marwah in this esteemed institution of AAFT is you get exposure to different aspects and facets of life. You bring to life different personalities, and without your knowledge, each one of you who has made a digital film, you have touched a life. And I tell you, after coming to AFT, my life has been transformed. Right? So with these words, wishing all of you all the best. I hope I'm here for the 200th edition with Dr. Sandeep Marwah. And we want to do something with you, sir. UAE released a digital film 3 years back, short digital film called It's Possible. So I think we should do something with the UAE government called I Am Possible, right? Not impossible, where we motivate everybody, to follow your great leadership vision. Thank you so much, sir, and all the esteemed. Thank you. Thank you very much, sir. Now I request Mr. Kumar Rakesh, sir, to please speak few words. धन्यवाद. काफ़ी बातें यहाँ कही गई हैं. There's so many things already. All the eminent filmmaker who is sitting here dies. So first, great respect and thanks to our Lord Rami Ranger, our chief guest today. And this is my privilege, and this is my, I think you can get a chance in this month we are meeting second time on the dice. And last 9th October we met in UK.
and just he honored me with an award or outstanding lifetime achievement in media and journalism, and just for the advocating for the Bharat and globe. So thanks again. And second and topmost, I think really Dr. Sandeep Marwah जी के लिए जो शब्द है वो कम पढ़ते हैं. अभी नकुल ने बड़ी अच्छी बात कही कि शब्द कम तब पढ़ते हैं जब व्यक्ति भावुक हो जाता है, और भावुक तब होता है जब वो दिल से सोचता है, और दिल से तब सोचता है जब दिमाग कहता है कि दिल ही सब कुछ है. तो दिल और दिमाग का जो संगम है, उस बीच में जो संदीप मारवा जी का स्थान है, वहाँ लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिल की बात सुनो या दिमाग की, लेकिन सामने संदीप मारवा आते हैं. तो ये एक इनका परिचय है. पिछले 20 वर्षों में मैंने देखा है, जो 20 वर्ष पहले थे, आज भी लगता है दिनों दिन युवा होते जा रहे हैं, जवान होते जा रहे हैं. उसका कारण है क्या? थ्योरी ऑफ पॉजिटिविटी पे जितना ये बोलते हैं उतना अमल करते हैं. ये सबके लिए इंस्पायरेशन है. जब भी आता हूं तो लगता है कि यहाँ जो बैठेगा 5 मिनट में एनर्जाइज हो जाएगा. तो वट एवर, बहरहाल जो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का है, ये आई थिंक मुझे लगता है कि एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहिए. गिनीज बुक तो खैर पुराने रिकॉर्ड थे, एक नया मुझे लगता है आप फिल्म ऑफ कुछ रिकॉर्ड बनाना चाहिए संदीप जी को, कि जो मोर देन दैट हो, हम उस पर डिपेंडेंट ना हो. क्योंकि अब नया युग है, नैरेटिव का युग है. हम जो डिफाइन करेंगे वही नैरेटिव होगा. और हमारे बीच में ग्लोबल वॉइस फॉर भारत डॉक्टर लॉर्ड रामी रेंजर हैं, जिनको मैं ग्लोबल वॉइस मानता हूं. यूके में रहते हुए भी भारत के लिए जितना ये कर चुके हैं, जितना करते हैं, शायद ही कोई करता होगा. जबकि मोर देन आई थिंक 10 से ज़्यादा पार्लियामेंट्री होंगे रामी जी यूके में, मोर देन 10-15 जो मतलब वो तो है. लेकिन मैं वो दूसरी बात कर रहा हूँ कि वहाँ जो एडवोकेट हैं एनराइज जो है इंडिया मूल के 15-20 हैं, लेकिन शायद आप लोग के कोई नाम नहीं जानते होंगे, 2-4 को छोड़ करके. और पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट का आउटसाइड भी, और जो कंट्रीब्यूशन है इनका, एक बहुत ही सेल्फलेस तरीके से काम कर रहे हैं भारत के लिए, भारत माता के लिए. और इनके जो पिताजी शहीद नानक सिंह का जो कंट्रीब्यूशन था, कौन नहीं जानता, और इनकी माता जी का कंट्रीब्यूशन वो कौन नहीं जानता. मतलब लगे हुए हैं, मतलब वहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, देश प्रेम है यूके में रहते हुए भी. और यहाँ यूके के लगातार 6 बार वहाँ की क्वींस का जो सीबी और सीबीई इनके नाम के आगे है, ब्रिटिश एम्पायर कमांडर ऑफ, वो शायद ही बिरलों को सबको नहीं मिलता. और बेस्ट क्वालिटी जो इनकी कंपनी है, लगातार 6 बरसों तक ऑनर किया गया उस जो सुप्रीम एम्पायर है वहाँ के. ये अपने जस्ट क्लैपिंग फॉर हिम कि ऐसा कभी नहीं हुआ ब्रिटिश ब्रिटेन के इतिहास में. बहरहाल हम पॉइंट पे आते हैं, चूंकि वहाँ दोनों भावुकता से भरे सज्जन हैं हमारे लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा भावुकता में और मैं बहुत कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ, नहीं बोल पाता हूँ. लेकिन जो ये 121st फेस्टिवल है, ये अपने आप में रिकॉर्ड है. और आप लोग जो हैं यहाँ पे, ऑल सिटिंग हियर, ऑल द फ्यूचर ऑफ द शॉर्ट डिजिटल फिल्म. और जो डिजिटल फिल्म है, व्हाट आई स्पेंट मोर देन 35 years in the media and the print, electronic, radio and TV, 2 minutes to 20 minutes. ये एक पैरामीटर्स होता है फिल्म बनाने का. बट हाउ वी कम्युनिकेट, whom to communicate, why to communicate, that is important. As Ajay Chitnis ji already listened, he said content is king. Always in media we say content is king. And my appeal, all of you, all you are youth, you are our future. हमारा ये है, मैं 2 लाइन बोल रहा हूँ कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः. इसको मत भूलना आप. दूसरा, अयम निजा परवेति गणना लगोचे साम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुंबकम. वसुधैव कुटुंबकम तो आप जानते होंगे, ये 5 जो पीछे का लाइन है, तो वसुधैव, इस थीम को आप मत भूलना. जो विश्वगुरु की बात है, डॉक्टर लॉर्ड रामी रेंजर भी इसके लिए काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर संदीप मारवा कर रहे हैं, हम सब लोग काम कर रहे हैं उसके लिए. और साथ साथ हमारा जो सनातन हिंदुत्व है, इसको आप लोग नहीं भूलना. जो कि अभी मैं कोट कर रहा हूँ, टी रिचर्ड ब्लटन की बुक है, जो ब्रिटिश म्यूजियम के एक्स डायरेक्टर थे. उन्होंने हाल में किताब लिखी है, 1.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड हमारा सनातन हिंदू कल्चर है, जो विश्व के गुरु है. तो 15 लाख साल पुराना हमारा कल्चर है, उसके आगे कुछ नहीं बचता. और हम विश्वगुरु थे, विश्वगुरु हैं और विश्वगुरु रहेंगे. आप लोग इस थीम को पकड़ो कि हम कहाँ, हम मेडिकल में नंबर 1 थे, स्पेस में नंबर 1 थे,
हम जो बिजली बनाया है वहाँ नंबर 1 थे। नोबेल पुरस्कार के मेरा शोध है 14 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारे वेद उपनिषद पुराण से मूलाधार लिया और उसको फिर बताया। तो मोर देन नोबेल हम लोग थे। नोबेल पुरस्कार को मार्केट किया गया, ब्रांड किया गया और कहा गया उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। अभी हम लोगों ने संदीप जी को पता है लॉर्ड रामन कि नेल्सन गांधी मंडेला एक पुरस्कार अमेरिका में एस्टेब्लिश किया गया, वहाँ भी किया गया, उससे ज़्यादा काम हो रहे हैं। और हम जो भारतवासी हैं, जैसा कि अभी संदीप जी से चर्चा हो रही थी कि न्यूयॉर्क फिल्म इंस्टीट्यूट जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ के लड़के 2.5 करोड़ खर्च करने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलती। और ये गौरव की बात है कि आपके बच्चे पढ़े हुए एक भी आज की तारीख में अनएम्प्लॉयड नहीं है। ये गौरव की बात है। तो हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा जो तंत्र है, हमारा जो सिस्टम है कि मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ, अजय हमारे जूनियर रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ पढ़ा और ये अपना चिराग पासवान मंत्री है, उनका भी एसोसिएशन यहाँ से रहा। तो ऐसे ऐसे ब्रांड निकले हैं और बाकी तो लंबी कहानी है, उसमें बैठेंगे तो 2 दिन कम से कम लगेंगे उस कहानी को बोलने में, बताने में। तो मेरा अपील है आप लोगों से कि जो भी 100 डिजिटल फिल्म बनाते हैं, डिजिटल इंडिया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का ये पूरा लक्ष्य है। डिजिटल इंडिया में वी आर टॉप इन द वर्ल्ड। हमारे जर्मनी के प्रीमियर आए, फ्रांस के प्रीमियर आए, वियतनाम के प्रीमियर आए, सबको उन्होंने डिजिटल पेमेंट बताया, व्हाट इज डिजिटल पेमेंट। and you have seen the photo कि how the Mr. Macron was paying the payment by the Paytm in Jaipur, सिटिंग चाय पीते हुए मोदी जी के साथ। तो मेरा मानना है कि हम डिजिटल इंडिया में बेहतर हैं और आप लोग जो हैं फ्यूचर हैं हमारे फिल्म मेकिंग के, और इसके लिए आप लोग कुछ ऐसे मैसेज दें जिससे भारत की संस्कृति, भारत का जो हिंदुत्व है, भारत का जो गौरव है वो लोगों में जाए और वो कम्युनिकेट करे। जो हमारा गुरुत्व है वो बढ़ के सामने आए, विश्व बंधुत्व जो है सामने आए। अभी आप देखिए कि मोदी जी को सभी लोग ऑफर कर रहे हैं शांति के लिए। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि यूक्रेन में आप शांति कराइए, इजराइल में शांति कराइए। इनकी अपील को सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री जिसके जाने के यूक्रेन में जाने 24 घंटे तक पूरा सीज फायर, फ्रांस का गया कोई सीज फायर नहीं, यूएस के गए कोई सीज फायर नहीं, जर्मनी के प्रीमियर गए कोई सीज फायर नहीं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी यूक्रेन जाते हैं 24 आवर्स का सीज फायर, सारे लोग हैप्पी एंड अपील। ये है पावर आपकी भारत की, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री की। तो मैं अभी लॉर्ड रामी रेंजर इससे मैं अनुरोध करूंगा आपकी, सॉरी मैं आपके काम में मैं थोड़ा दखल दे रहा हूं, भावुकता बस कि हमारे को थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करें, जो काम कर रहे हैं बताएं, और तमाम इसी तरह से एनर्जाइज किया हम लोग को एनर्जाइज करते रहें और भारत का मान सम्मान को इसी तरह से विश्व पटल पे गौरवान्वित कर रहे हैं। इसी अपेक्षा साथ लॉर्ड रामी रेंजर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। Before proceed further, I request Honorable Chancellor sir with all the dignitaries for the poster release of 17th Global Film Festival Noida 2024. You are making history. You are making history with this release. What a great privilege to be present at this historical time. Opportunity. Thank you, sir. एक 2-3 है भैया, आप पकड़ो, सब पकड़ो और फिर फोटो खिंचाते सारे। हाँ ऐसे दो लो जी, साथी हाथ बढ़ाना साथी। सबसे पहले जय हिंद, वेल डन। देखो ये कार्यक्रम शुरू किया तो हमने लॉर्ड गणेश जी से आशीर्वाद लेके शुरू किया। हमने दिए जगाए रोशनी के लिए, पवित्रता के लिए। ये हमारी एंशिएंट सभ्यता है। वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमारी सिविलाइजेशन 5000 साल पुरानी है। कल मैं अयोध्या था राम मंदिर में, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्य फील कर रहा था कि 500 साल से ये अपॉर्चुनिटी लोगों को नहीं मिली थी जो मुझे मिली, कि मैं अपने साथियों के साथ, देवेंद्र त्यागी स्पेशली लंदन से आए, मेरे साथ आए, तो हम गए, भगवान राम से आशीर्वाद ली। और आपको सबको ये जान के खुशी होगी कि भगवान राम
भगवान कृष्णा, they were inspiring humanity long before any religion. ये सबसे पहले हमारे जो भगवान हैं जिन्होंने हमें गाइड किया, नॉलेज दी, और लॉर्ड राम जैसा करेक्टर कहाँ मिलता है जो अपने फैमिली ऑनर के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सब कुछ बलिदान देते। फिर उन्होंने जंग की, इतने शक्तिशाली दुश्मन से उसको हराया सिर्फ वानरों की फौज से। देखने वाली बात है कि उसका मैसेज है कि कितना भी कोई शक्तिशाली हो, अगर आपका कॉज राइचियसनेस है, सच्चाई पे है, तो तुम्हें आपको हमेशा जीत होगी। आज मैं दिल से, गहराइयों से संदीप मारवाह जी का थैंक यू करता हूँ, जिन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम में इस नाचीज़ को इतना बड़ा ऑनर किया, और इतने अगस्त गैदरिंग है जो डायस पे एक के बाद एक जिनकी आपने ब्रीफ सुनी, कमाल है। इंडिया गॉट टैलेंट। मैं आपको 3-4 चीज़ें बताऊंगा अपनी लाइफ के बारे में। सबसे पहले जिंदगी में ये बात रखना कि एक कम्युनिटी इज एज ग्रेट एज इट्स लीडर। एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी इज एज ग्रेट एज द वाइस चांसलर। एंड यू आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव Dr. Sandeep Marwah, whose opening speech was so inspirational. He has a dream. His dream is to make you somewhere in the world where you are noticed. Mediocrity will get you by, but it will not get you noticed. मैं एग्जाम्पल देता हूँ डॉक्टर्स का। किसी डॉक्टर के पास 5-5 हजार मील चल के लोग आते हैं। क्यों आते हैं? कि वो डॉक्टर कभी रश में नहीं है। He does not rush. वो अपना टाइम लगाता है। He spends great deal of time trying to diagnose his patient correctly. अगर चाहे तो सेकंड ओपिनियन भी लेता है, थर्ड ओपिनियन भी लेता है। He is not in rush to make money. फिर जब उसको समझ आ जाती है क्या प्रॉब्लम है, फिर सोचता है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। और जो घटिया डॉक्टर हैं उनके पास टाइम ही है नहीं। नेक्स्ट करके जैसे कोई कमोडिटी को बेचता है। तो आपको भगवान ने इतना ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दी है कि फिल्म इंडस्ट्री इज ए इंडस्ट्री ऑफ क्रिएटिव माइंड्स। इतने क्रिएटिव माइंड हैं जो कमर्शियल बनाते हैं। In less than 30 seconds, they have to get across a message जो सारी हिस्ट्री प्रोडक्ट की बता देता है 30 सेकंड में। मेरे जैसे तो 1 घंटा बोलेंगे तब भी आपको समझ नहीं आएगी क्या बोल गया। तो यू आर ब्लेस्ड, यू चोज द इंडस्ट्री। रिंकू जी अपने बैठे ऊपर, जिनको यूके में भी सम्मान मिला, कि कोई काम करके दिखाओ जिससे आपके माँ बाप जिन्होंने इतनी सेक्रीफाइस की। आज हमारे सामने कुमार राकेश जी की बेटी डॉक्टर बैठे हैं, कितनी कुर्बानी की होगी माँ बाप ने। इन्वेस्टमेंट इनटू चाइल्ड। अगर बच्चा पढ़ाई ना करता कितना दुख होता। आज वो देश की सेवा कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। आप भी थ्रू मीडिया you can send messages, you can create films which can change society, which can change the mindset of people. Women empowerment is the most important subject in the world. जो औरत को पीछे रखते हैं खुद भी पीछे हो जाते। मैं सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ। माई फादर वॉज assassinated before my birth. मैंने बाप नहीं देखा अपना, सिर्फ माँ ही थी मेरी। 8 बच्चे,
पार्टीशन में मेरे बाप ने, he was against the partition, but unfortunately DAV स्कूल के बच्चों ने जुलूस निकाला. They got caught in communal riots. My father being a local leader, he went to save them. He managed to save the student, but he lost his own life for Hindu-Muslim unity in India. He wanted a country free of rivalry. उन्होंने warn किया था जिन्ना को, if you create a country on the basis of religious hatred, how will you remove it? जो 77 years ago बात उन्होंने की थी कि नफरत से बनी चीज नफरत से आगे बढ़ेगी. कितनी नफरत फैलती हो, आज तक वो नफरत ही भेज रहे हैं, क्योंकि उनका जो बेस है नफरत है. जब वो प्यार करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, उनकी जो वजूद खत्म हो जाएगा जिसके ऊपर वो बेस कर रखे. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, 3-4 चीज़ें आपको बताता हूँ. मैं 55 साल से इंग्लैंड में रहता हूँ. जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, उन्होंने हमें एक शक्ति दी, रिस्पेक्ट दिया, ऑनर दिया दुनिया में. आज हर आदमी गर्व से कहता है मैं इंडियन हूँ. मेरे पाकिस्तानी दोस्त भी कहते हैं मैं इंडियन हूँ. Now I request Honorable Chancellor Sir to honoring our guest with the membership of International Film and Television Club and International Film and Television Research Center. First goes to Lord Rami Ranger for the International Film and Television Research Center. Research Center. सारी जिंदगी में फिल्म में जाना चाहता था, आज मैं पहुंच गया हूँ. आज मुझे असली फिल्म इंडस्ट्री में जगह मिल गई है, and I have a certificate to prove it. Lovely. Thank you. ठीक है, कोई नहीं कह सकता कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं. जय हिंद सर, मारवाह साहब, थैंक यू. Honorable Chancellor Sir to present Mr. Nakul Wali, the International Film and Television Club, the membership of International Film and Television Club. Nakul ji, don't forget to send me the subscription. Thank you. Congratulations. Well done. The International Film and Television Club membership goes to Mr. Siddharth S. Nair. Again, sir, please. Very subtle. Raji, aye sir. It's a great honor and well done receiving this great honor. तो देखो अवार्ड के ऊपर अवार्ड मिल रहे हैं, अवार्ड के ऊपर. Thank you. Great man. Next membership of International Film and Television Club goes to Mr. Winky Singh. Ms. Winky Singh. लो जी, यूके में भी ऑनर, इंडिया में भी ऑनर. The membership of International Film and Television Research Center goes to Dr. Karthik Ramesh. कार्तिक साहब आइए सर. Life membership of International Film and Television Research Center goes to Mr. Kumar Rakesh. एक तो भैया कांप रहा है, अवार्ड कांप रहा है और वाइब्रेशन आ रही है. तो इनको हाथ कौन लगाएगा? जी आपकी कमाई धन है, इनसे इतनी बिजली वाले आदमी से कमाल है. थैंक यू. नामक इस छोटी फिल्म के अभ्यास को एक रोमांचक और नए मीडिया दुनिया में स्थापित किया गया है. इस फिल्म को बनाने के लिए AI का उपयोग किया गया है, जो छवियों को बनाने, स्क्रिप्ट्स में मदद करने और संगीत एवं गीतों की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. छात्रों ने इस अभ्यास में न केवल अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया है, बल्कि आधुनिक तकनीकों का भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया है. यह नई मीडिया की दुनिया के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है. 3, 2, 1. हाय, मेरा नाम देव है. मैं एक जासूस हूं और पुलिस की मदद करता हूं केसेस को सॉल्व करने में. अभी मैं जिस केस पे काम कर रहा हूं बहुत ही दिलचस्प है. एक आदमी है कैलाश, उसको अपनी पत्नी के मर्डर के लिए गिरफ्तार किया गया. उसकी पत्नी को जहर देकर मारा गया.
ऐसा लगता है कि जैसे कैलाश को अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पता चल गया था। हमारे पास दो गवाह भी हैं। पहली एक महिला मिसेस गुप्ता जो कि व्हीलचेयर पे हैं, दूसरी उनकी टीनेजर बेटी जो कि काफी शर्मीली और इंट्रोवर्ट है। तो आइए देखते हैं कि ये केस हमें कहां ले जाता है। School of Media Studies, present cuts of gone, a thrilling ascent, a film written by artificial minds, mystery unfolds, secrets it finds. Music by AI, rhythm so divine, feel the tension, watch the storyline, guess who the murderer is, can you see? Jai Hind. We are here at Marwah studio for the AAFT 121st short film festival, which itself is a historical day and event. So the credit goes to Dr. Sandeep Marwah. His dedication, he's a man of vision. When he came to Noida, there was nothing. Now there's everything. That just shows a man of vision goes where people follow afterward. So Marwah Saab ki team, his leadership will transform the life of so many young people who will then fly the flag for India. Today, we are well respected throughout the world because of Modi ji's leadership. Prime Minister Modi ji has put so much honor, pride in us for bringing transformation to this country that everybody in the world respect. People are queuing to do business in India. सारे लीडर यहाँ आ रहे हैं क्योंकि हम बहुत पुरानी सिविलाइजेशन के हैं और हमारा फ्यूचर बहुत आगे जाने वाला है. And all of these people know the future lies in investing in India, and you are very fortunate to be in India. Just imagine if you are in another country. Yes, there are countries people are ashamed to say वो अपने सिटीजन को इक्वालिटी नहीं देते, औरतों को इक्वालिटी नहीं देते. हमारा संविधान सबको इक्वालिटी देता है. रेस, रिलीजन, जेंडर सब हमें हमारा ये वैल्यूज है. इसलिए मैं आज बहुत गर्व से बोल रहा हूँ कि young people are the future of India and they are getting the best training to be the best ambassador of India. So मेरे यही शब्द हैं कि जो भी काम करो दिल से करो और अब पूरा पोटेंशियल जो है भगवान ने आपको सब कुछ दिया है. अगर कोई आपको पीछे करेगा तो वो खुद आप ही होंगे. आपको कोई पीछे नहीं कर सकता. हमें जब इंग्लैंड में मैं गया था हमें कितनी प्रेजुडिस थी, वहाँ रेसिज्म थी, कितना तंग करते थे. कभी तो हमने कहा नहीं, हमारी सिविलाइजेशन हम वैल्यू लेके आए इंडिया से. हमारी वैल्यू बहुत है, हमारी वैल्यू. सो विद गुड वैल्यूज यू विल बिकम गुड सिटीजन. जय हिंद. ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज हम लोग 121वें AAFT फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स का यहाँ पर उद्घाटन के लिए एकत्रित हुए हैं और देश भर और दुनिया भर से लोग एक बार फिर से इस महाउत्सव में पहुंचे हैं. मजे की बात तो ये है कि हम लोगों ने आज फिर से एक बार एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम कर लिया है, क्योंकि जब हमने 120वां फेस्टिवल किया था तो वो एक अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना था. आज 3 महीने के बाद हम लोग खुद ही अपने अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं. अब तक दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा फेस्टिवल नहीं है जो अब तक 121वां एडिशन पेश कर चुका हो. कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं है जो साल में 4 दफा होता हो और इस फेस्टिवल की शायद यही महानता है कि ये साल में 4 दफा होता है और 121वां एडिशन है. और ये एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जिसने अब तक 3000 से भी ज्यादा डायरेक्टर्स की पहली फिल्म को इन फेस्टिवल के जरिए दर्शाया है. वरना बड़े से बड़े फेस्टिवल में 2, 4, 6 नए लोगों को मौका मिलता है आगे आने का. यहाँ हम लोग 3000 से भी ज्यादा डायरेक्टर्स को उनकी डेब्यू फिल्म को यहाँ पेश कर चुके हैं, जो हमारे पास 100 से भी ज्यादा मुल्कों से पहुंचे हैं. और मुझे खुशी है कि लॉर्ड रेमी रेंजर जो मेंबर पार्लियामेंट हैं हाउस ऑफ लॉर्ड ब्रिटिश पार्लियामेंट के, वो आज के मुख्य अतिथि रहे और उनके शब्दों ने हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया है. बहुत खुश होके गए हैं. उन्होंने AFT के और मारवा स्टूडियो के इस सारी फैसिलिटीज को बहुत सराहा है और हमें फिर से एक बार एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का एहसास हुआ है. हमारे बीच में कार्तिक हैं जो यहाँ दुबई UAE से पहुंचे हैं. हमारे पास यहाँ पर नुकुल हैं जो आयरलैंड से यहाँ पहुंचे हैं. बम्बई से हमारे पास यहाँ पे अजय चिटनिस जी पहुंचे हैं
और विंकी जी जो खुद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेकर रही हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो फिल्में आज यहाँ दर्शाई जा रही हैं वो सभी लोगों को पसंद आएंगी। नहीं, देखिए फिल्म बनाने के तौर और तरीके हैं जो यहाँ AAFT में सिखाए जाते हैं। सबसे छोटा कोर्स 3 महीने का है और सबसे बड़ा कोर्स 3 साल का है। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PGDM, जितना आपके पास वक्त और जितना आपके पास पैसा है उसका आप अपना अंदाजा लगा के यहाँ आइए और फिल्म मेकिंग के इस पूरे कार्य को बड़ी तमीज और तहजीब के साथ यहाँ सीखिए। डॉक्टर रेमी रेंजर ने भी बड़ी अच्छी बात की कि जो लर्निंग है इट इज अ प्रोसेस। कोई एक दिन में फिल्म मेकर नहीं बनता है, लेकिन अगर जो तौर और तरीके हम लोगों ने यहाँ तैयार किए हैं, पिछले 31 साल से हम लोग फिल्म और टेलीविजन की एजुकेशन यहाँ दे रहे हैं। और ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है कि ये एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसने लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज जो है वो देश को दिए हैं। ये इसमें अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बची, चाहे वो मिस इंडिया हो, मिस वर्ल्ड हो, मिस यूनिवर्स हो, मिस यूनिवर्स 3 हो, मिस्टर ग्लैडरेक्स हो, बड़े से बड़ा फिल्म मेकर, एडिटर, डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, एक्टर्स, तो ये तो लाइन लगी है। और अगर आप एक अपना कैमरा इस दीवार पे घुमा दें तो आपको यहाँ से उन तमाम कुछ चर्चित फिल्म निर्माताओं के और फिल्म मेकर्स के नाम आपके सामने आ जाएंगे। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले आप सब लोगों को और आदरणीय संदीप जी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपका 121वां प्रोग्राम है और 121 फिल्म फेस्टिवल्स करना कोई आसान काम नहीं है। ये सारा श्रेय उनको जाता है और आप लोगों को भी, क्योंकि आप लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की एक फेस्टिवल करने में, क्यूरेट करने में बहुत टाइम लगता है। तो बहुत बहुत बधाई आपका। सर, यूथ के लिए क्या मैसेज? यूथ के लिए मैसेज देने के लिए मैं शायद अभी इतना परिपक्व नहीं हूँ, या मैं बेसिकली डॉक्यूमेंट्रीज करता हूँ और उसी के बारे में मैं कुछ कह सकता हूँ। लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है, आप में कठोर परिश्रम करने की इच्छा है और आपको एक परसिवियरेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आप परसिवियर करते जाएंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो आप कर नहीं सकते। थैंक यू। मेरा नाम कुमार राकेश है। मैं मीडिया इंडस्ट्रीज में करीब 35 वर्षों से हूँ, ज़्यादा हो गए, 37 वर्ष हो गए। और हमने सभी विधा को देखा है, प्रिंट, ऑनलाइन, रेडियो, फिल्म कर 124 डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई है। तो शॉर्ट फिल्म जो है आज के युग का सबसे बड़ा ये मांग है, और उस मांग में 2 मिनट छोड़ दीजिए, 10 सेकेंड से लेकर के 20 मिनट तक, मतलब 12 सेकेंड तक आप में कितनी शक्ति है, आपके कंटेंट में कितनी शक्ति है कि आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जो डिजिटल इंडिया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो एक स्वप्न है जो साकार हो चुका है, और कई देश, अमेरिका जैसे देश भी डिजिटल इंडिया, जो डिजिटल भारत है, उस मामले में काफ़ी पिछड़े हैं, हम उनसे काफ़ी उन्नत हैं। जैसा भाई भी मैंने कहा था और आपको सुना भी होगा कि वे फ्रांस के प्रीमियर आए, जर्मनी के प्रीमियर आए, सबने कहा ये कैसे हो सकता है कि सब्जी वाले को हम पैसे पेमेंट कर रहे हैं पेटीएम से। तो मतलब ये जो डिजिटल शॉर्ट फिल्म जो है, खासकर डिजिटल फिल्म, काफ़ी इफेक्टिव हो रहा है, हो सकता है अपने भारत को विश्व गुरु बनाने के अभियान में हमारे संस्कृति को, हमारे हिंदुत्व को, हमारे इस नए भारत को विश्व को बताने के लिए हमारी शुभकामनाएं। और हमारे सभी मीडिया बंधुओं से भी, जो भी हमारे भाई बहन हैं मीडिया में, उनसे अपील है कि सोचें भारत के उन इतिहास को लेकर के जो मैंने कहा 15 लाख साल पुराना है, अरबों साल पुराने इतिहास से ब्रह्मांड की जो परिकल्पना थी वो हमारी थी। वेद पुराण उपनिषद ही हमारा मूल आधार है विश्व का। जो भी आप देख रहे हैं, धरती जो अर्थ है, 8 मिलियन की जो 8 बिलियन की जो आबादी है, उसके भी हम सर्जक रहे हैं। और अभी हम विश्व के करीब 200 देशों में 5वें स्थान पे हैं और आने वाले दिनों में 3रे स्थान पे होंगे। और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है विकसित भारत एट 2047। हो सकता है उसके पहले हम अमेरिका को भी क्रॉस कर जाएं, क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका की स्थिति वो नहीं है जो पहले थी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। संदीप मारवा जी को धन्यवाद, मारवा स्टूडियो धन्यवाद, इस तमाम आयोजन के लिए उनका भी आभार। Thank you so much for inviting me to Dr. Sandeep Marwah ji, and many wishes for the 121st Festival of the Short Digital Films in AAFT. Many more centuries to come. 1 सेंचुरी तो हो गई है, बहुत सेंचुरी आएगी। मेरा नाम नकुल वली है, मैं एज ए रिसर्च साइंटिस्ट हूँ
और आई एम अ पार्ट टाइम थिएटर आर्टिस्ट इज वेल, और मैं इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ आइलैंड के साथ जुड़ा हूँ, जिसमें हमने 15 साल से हम फिल्म मेकिंग पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उसको वी ट्राई टू प्रमोट, जैसे शॉर्ट फिल्म्स हो गई, बहुत सारे ऑफ द कमर्शियल फिल्म्स को हम लाते हैं. एंड थिंक दैट्स व्हाट आई वांट टू ब्रिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ग्लोबल इंडिया. एक विजन के साथ हम चाहते हैं कि सभी आप सब दर्शकों, फिल्म मेकर्स ऐसी फिल्म्स बनाए दैट प्रेजेंट द रियल ट्रुथ अबाउट इंडिया as a whole, and I want to wish everybody all the best. Thank you so much. मैसेज देना चाहेंगे जो इस फील्ड में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में, उनसे बिल्कुल मैसेज. शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग थॉट है, और विद द इंफ्यूजन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI in the entire process, it is totally a game changer now. So what I would suggest to the student is that they should, as in my initial speech also, I said learning is very important. As we know that filmmaking is not just somebody just went to the floor and the content is made. You have to rigorously work on it. So there has to be conviction in whatever thoughts you have. In terms of, let's say there is a script, there is a story, there is a thought, you need to draft it properly and get the proper feedback system. There is a feedback system in this. So you talk to your seniors, you show it, share it, and get the proper feedback, make corrections, rework, back to the drawing sketch table, and then rewrite the script. Make it as strong as possible, because you have to understand that now the patience level has really gone down of the audiences. So, where we have reels and Instagram and short videos really playing, you can't just hold the audience. So your script which is the first stage, should be able to hold the film, should be able to hold the audience there. Second, when you shoot, when you make the production, you have to ensure that all the things are in place, and it has to be a very planned effort. Whenever you go to the floor, there has to be proper time sheets and everything very planned. And the time sequences not only with the production, but also with the script part of it, and the dialogue deliveries and everything. And it is not much that everything, because we belong to an era which is like where there is no dialogue. Even those films get very well. So when you have dialogues, you need to have very drafted dialogues, have a scripted dialogue which is like making sense to the audience, and then finally on the stage where you edit the film, that also needs a lot of efforts, and with the usage of artificial intelligence, visual effects, you can very wonderfully entice and make it more engaging. So I would suggest to the students that do get more understanding on the new tech which is there. Also, writing is also very important, so just make focus on that, and I'm sure the content will have a lot of value.